Good afternoon and welcome back to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, bulls are back with a bang on Monday, and the Nifty and Sensex both ended a 3-day losing streak, although we still have to see whether this is just a technical bounce back or whether the market can sustain today's round of upswing. Well, coming back to the moving on to the major gainers of the day, we had M&M, HCL Tech, TCS, IndusInd Bank gaining close to about 3.5% each. The India Volatility Index down by about 1.5%, and in the F&O space we are seeing build-up of long positions in Intellect Design Arena, Persistent System and HCL Tech. So pretty much a lot of enthusiasm being seen for IT stocks across the board. And in the case of short positions, we are seeing those in Titan Industries despite the third quarter business update being on expected lines. Also GNFC and Atul Limited are the other futures where there has been more build up of short positions. संतोष, जैसे कि आप बता रहे थे, वेरी स्ट्रॉन्ग सेशन फॉर द मार्केट्स. इनफैक्ट 18,100 के ऊपर क्लोज आपको प्रोविजनली आता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी पे. पिछले हफ्ते हम 18,000 के नीचे स्लिप हो गए थे. तो कहीं ना कहीं आज जो आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ थी, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस and also big boy Reliance Industries, Bharti. So we had a very secular rally in the markets today. In fact, small and mid caps stocks were also showing strength, and probably that is reflecting in the advance decline ratio, which was almost 2:1, Santo. Well, yes, clearly the rally led by frontline stocks today. Yatin, still investors and traders appear to be a little wary of mid cap stocks at this point in time. Right. What explains that? So I think ahead of the budget and the result season, especially into TCS earnings, I think there is a lot of skepticism in the markets. What will be the management commentary? कैसे results रहेंगे TCS के? तो काफ़ी सारे सवाल हैं. Obviously 5 बजे TCS के results more or less आने चाहिए. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जहां मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस और जो वे फॉरवर्ड है, क्लाइंट फीडबैक है, वो शेयर कर सकता है मीडिया के साथ. तो कहीं ना कहीं वो अवेटेड है. और पिछले हफ्ते सेंटो जो बाजार में मार लगी है एचएनआईज को, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं, आई थिंक वी आर स्टिल रिकूपिंग. और जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, मुझे लगता है वापस लोग आएंगे मिड कैप में निवेश करने के लिए. Well, and with that we move on to the stocks that caught our attention today, starting off with Mahindra and Mahindra. This was one of the big gainers in the Nifty today. Now it's very close to its 52-week high. Now the company will be starting bookings for the XUV 400 electric vehicle later this month. That could have been one of the triggers for the renewed buying interest in the stock. And XUV 400 is M&M's first electric vehicle. And the company has said that it will invest about 10,000 crore in its EV plant in Pune, and also it is looking to target the B and C segments of the SUV, and even within the B and C segments right now it's looking at the C segment where sales are about 30,000 units per month. Both the B and C segments put together clock sales of about 90,000 units per month. And according to Mahindra and Mahindra, the transition from internal combustion engine to electric vehicle in the SUV space will take some time, and it is in no hurry to launch a low priced electric vehicle variant at this point in time. The company has a revenue market share of close to about 20% in the SUV space right now, and it is looking to further build on that. But one caveat, Santo, और यहाँ अगर हम देखें तो मारुति एक बड़ा प्रोडक्ट लाने वाली है SUVs में. Obviously they are market leaders in passenger vehicles. They have not done much in the SUV segment, so the launches are awaited there. In fact मारुति ने कहा है कि 3 नए SUVs वो अगले 12 महीनों में लॉन्च करेंगे. हुंडई की काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, और इन जनरल हम देखें तो कंपटीशन हीट अप हो रहा है SUV मार्केट में. ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो XU700 है, स्कॉर्पियो एन है, वो बहुत बेहतरीन कर रही है मार्केट प्लेस में, और अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं. तो ये देखना होगा किस हिसाब से कंपटीशन शेपअप होता है, बिकॉज टाटा मोटर्स भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में. तो ये देखा जाएगा कि ये कितना सस्टेनेबल बेसिस पे अपना मार्केट शेयर ले जाते हैं. जैसे सेंटो बता रहे थे 20% रेवेन्यू मार्केट शेयर है, तो उसको एक रिस्क हो सकता है कंपटीशन का. Well, true, but it has got another engine in the form of tractors also, which to some extent could take some of the heat and the pressure in the SUV segment. Correct, but that growth has also slowed somewhat in the last few days and last few quarters per se.
because as the Rabi season progressed, there are reports that the rural markets are slowing down. In fact, if you see Santo, a lot of FMCG companies are talking about slowdown in the rural markets. That could not augur really very well for tractor sales. So past few days have been quite volatile in terms of the rural markets and the demand scenario there. But as Santo is mentioning, obviously another thing for Mahindra and Mahindra to watch out for will be the tractor segment. Well, your stock, Yatin. Santo, if you look at the marketplace, obviously consumption stocks are in focus, and if you look at the stocks that I have picked up today is Zydus Life. There was a brokerage note today which talks about the successful US market launches of branded drugs. In fact, डोमेस्टिक मार्केट में भी जाइडस बहुत बेहतरीन तरीके से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. आज अगर हम एफएनओ मार्केट्स की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा हुआ और डीलिंग रूम्स ये कह रहे हैं कि यहाँ एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं. इन जनरल हमने देखा है कि आईटी फार्मा जो लैगिंग सेक्टर्स थे वो फिर से एक बार एक रैली पिकअप कर रहे हैं, तो शायद ये जाइडस लाइफ यहाँ फिट होगा. ऑब्वियसली यूएस मार्केट्स में 3-4 बड़े लॉन्चेस हैं आगे जाते हुए. अगर वो टाइमलाइंस को मीट करके वो लॉन्च कर देते हैं यूएस मार्केट्स के लिए, तो शायद एक अर्निंग्स को बहुत अच्छा सपोर्ट आगे चलते हुए देखने को मिल सकता है जाइडस लाइफ के लिए. Well, the fundamental side of the story looks good, Yatin, but I think temporarily it could run into some technical resistance for the simple fact that the stock had made a high of about 650 more than a year back, and at that time you had seen a lot of heavy volumes in the stock. The story was pretty hot, and people who have been stuck at this higher levels, because since then the stock price has been steadily falling, and it's still about close to about 30% lower than its previous high. So the moment the stock comes anywhere near that, you're going to see one round of selling there for sure. So I think that if anything could be a near-term dampener for that stock. Well, Page Industries is the next stock on our watch list. This has been an underperformer even in today's buoyant market. Page Industries was under pressure. The stock has now fallen more than 20% from its recent high. Now, the management had spoken to CNBC TV18 some weeks back, and the commentary didn't seem very optimistic. One of the things that they had mentioned was that overall consumer sentiment is quite weak, and even Page Industries has been hit by that. And the second point they said was that even if cotton prices go up, they are largely expected to remain stable, but even if they go up, the company will not be raising prices. Now, that probably indicates some kind of pricing pressure, although the company said that it's on track to meet its guidance of 10,000 crore revenue for FY23. And we have MK Stockbroking, which is one of the brokerages bullish on Page Industries at this point in time, and basically it has said that the problems in the supply chain, which was one of the things holding back growth, should sort out by Q4. The sales should see a strong rebound. Q3 may not be all that good because there is a high base effect as well. So once that too goes out of the equation, Q4 number should be better and the company should be able to meet its guidance. और सेंटो इसमें एक बड़ा पार्ट है ये है कि ऑब्वियसली जो मेंस इनरवेयर सेगमेंट है यहाँ वो मार्केट लीडर हैं, फोकस वो वुमेन्स सेगमेंट में भी कर रहे हैं, और दूसरा के जो स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट है और जो नाइट वेयर सेगमेंट है, काफ़ी सारी जगहों पे आई थिंक कंपनी अपना मार्क बना रही है. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इनर गारमेंट्स बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन विच द कंपनी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई. A lot of moving parts. Let's see if they get success in gaining market share because a lot of e-commerce and online sales is what the company is also targeting. तो काफ़ी सारे नए नए सेगमेंट्स में नई नई चीज़ें वो ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, काफ़ी सारे उन्होंने ब्रांडिंग भी खड़े करके रखे हुए हैं स्पेशली इन द स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट. तो लेट्स सी हाउ रियली डज इट फेयर. वेल बट जो शो की शुरुआत में हमने कहा था, आईटी सेक्टर एक चीज़ है जो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थी, लेकिन मेरी नज़रें रहेंगी आज टीसीएस के रिजल्ट्स पे. टीसीएस की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते हर दिन 1-2% आईटी स्टॉक्स आपको गिरते हुए नजर आए, लेकिन सेंटो आज एक शानदार रैली हमने आईटी स्टॉक्स में देखी. इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सभी के सभी आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल आग लगी हुई थी. इनफैक्ट टीसीएस की बात करें तो लगभग 3.5% ऊपर, लगभग डेज हाई के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये शेयर. देखिए यहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है. ऑफ 52 वीक हाइज आपको आईटी शेयर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. अगर मैनेजमेंट कमेंट्री ठीक रही, रिजल्ट्स ठीक रहे, मार्जिन्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ब्रोकरेजेस, 30 से 50 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होगी अक्रॉस द बोर्ड आईटी कंपनीज के लिए. रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगा,
लेकिन अगर किसी प्रकार का नेगेटिव सरप्राइज नहीं है रिजल्ट्स में, तो एक शार्प बाउंस बैक होने की तैयारी पूरे के पूरी आईटी सेक्टर में हो सकती है सैंटो, क्योंकि बीटन डाउन नेम्स हैं, शॉर्ट पोजीशंस रिजल्ट्स के पहले पहले पिछले वीक हमने बनती हुई देखी थी, और आज जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है, शायद मुझे लगता है कोई सरप्राइज आपको अर्निंग्स में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। Well, the counter argument could be to that could be Yatin that maybe the bears decided to cover up their positions for now, and that explains the big rally in the stock. Because if you look at the last couple of quarters, not that the numbers were disappointing, not that the guidance was bad, the commentary was good, and yet there is something that the market seems to be concerned about. They almost seem to be betting that the US economy is slipping into a recession, and that being the case, Indian IT companies will definitely feel the heat. If you look at the hiring numbers, that is something what the market has been closely watching, and the hiring numbers for both quarters, the first as well as second, were short of market expectations, almost prompting them to think that the business pipeline, while for FY23 is good enough, may not be as good for FY24, and now you have Microsoft's Satya Nadella also seeing that it's going to be a difficult year for tech companies in general. FY 2023 is likely to be a tough year, which means that they will have to focus on cost efficiency. So, all these put together, Yatin, I think maybe there could be some more bounce back, which will largely be led by short covering, but at the same time, the near term outlook, would you see buyers jumping in to buy at these levels? That looks a little doubtful for now. बट सैंटो, एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर, थोड़े दिनों पहले हमने प्रशांत जैन साहब से बात की, वो फॉर्मर फंड मैनेजर थे, HDFC म्यूचुअल फंड के CIO थे। उनका कहना यह है कि नाउ वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी। IT एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप अब दरकिनार नहीं कर सकते। शायद 6 महीने, 3 महीने, 1 साल आपको रिसेशन होता हुआ दिखाई दे, स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे, बट जो डिजिटाइजेशन हो रहा है देश में ग्लोबली, IT की स्पेंड्स बढ़ रही हैं, IT अभी एक बैकबोन बन गया है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, तो ये IT सेक्टर जो है ये रिडंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सैंटो का मानना ये है कि शॉर्ट टर्म में शायद पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिना IT सेक्टर के ग्लोबल ग्रोथ को आप अचीव नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। तो एक इंटरेस्टिंग नोट के साथ क्लोज करते हैं आज का ये सेशन। Well, that's all that we have in this episode of Closing Bell. Thank you for watching, and we'll be back with you again at 9 AM tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।